Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I'm here with the 7th online lesson of class 7 Social Studies. Our today's topic is unit number 4, chapter number 4. Students, before you get seated, the material required is lead pencil. You must have your highlighters, ruler, blue pen, blue marker, and you also need your geography textbook, your social studies notebook, and you also need your winter pack. So students, the topic we are going to discuss is unit number 4, people and economics. And in this unit, we will discuss chapter number 4, that is about industry. Industry क्या होती है? सनत को कहते हैं. Like कोई खास सनत जिसका ताल्लुक किसी खास कारोबार से हो, उसे industry कहते हैं. The contents for today's video is we will talk about primary industry, secondary industry, tertiary industry, and then we will do our notebook work. So students, by the end of this lesson, you will be able to know about the primary, secondary and tertiary industry. Then you will get to know about major industries and then what is gross domestic product. Okay, all of you open your books at page number 85. Take out your lead pencils and prepare your page. Write down today's task, mention the day and date. Also take out your highlighters to highlight the important points. As we are going to read unit number 4, chapter number 4, that is industry. And industry means सनत को कहते हैं. Pakistan's economy can be categorized as semi-industrialized as it's still behind the fully industrialized country. अभी पाकिस्तान की जो मौशत है अभी fully जो है वो industrialized नहीं बनी, अभी बहुत सारे मुल्कों से पीछे है. The country's industrial sector constitutes to 24.3% of the country's gross domestic product. GDP कहते हैं like एक मुल्क में पूरे साल में जितनी भी प्रोडक्शन हो, जितनी भी गुड्स बने और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हो, उनका ग्रैंड टोटल जो है वो जीडीपी में आता है आफ्टर ईयरली बेसिस. पूरे एक साल बाद जो है उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि पूरे मुल्क में पूरे एक साल में कितनी जो है वो प्रोडक्शन हुई, कितनी इनकम थी, क्या गेन हुआ, क्या लॉस हुआ. दैट इज द जीडीपी. Pakistan has a total labor force of 55.88 million workers as of 2009. 2009 के भी बात करें कि पाकिस्तान की जो काम करने वाली लेबर फोर्स है that is 55.88 million workers. The major industries of the country are textile, steel, cement, agriculture, ज़राअत को कहते हैं, fertilizer खाद, tobacco तंबाकू, edible oil खाने वाला तेल, pharmaceuticals that is related to medicines, construction materials, shrimp, sugar, food processing, chemicals and machinery. These all are the major industries of the country. Next we have the sectors, that is the very first is the primary sector of the economy makes use of natural resources and this includes agriculture, forestry, fishing. मतलब primary sector में क्या होता है कि जो natural things हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो बनी हुई है उन चीज़ों को जो है यूटिलाइज किया जाता है. लाइक एग्रीकल्चर, ज़राअत, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मतलब ये सारी जो है वो नेचुरल थिंग्स है, अल्लाह ताला ने ही बनाई हुई. तो इन चीज़ों को यूज़ करके जो है वो नेक्स्ट फर्दर जो है काम करते हैं. इसको इस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं. ऑल ऑफ यू हाईलाइट दीज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट पेज नंबर 85. Okay, next we have the secondary sector that produces manufactured and finished goods and products. मतलब primary sector जो हमें चीजें मिली हुई हैं और इसी को manufacture करना, मजीद बनाना और इसको अच्छे तरीके से finished goods बना देना और इसकी products बना देना. This sector is often divided into light and heavy industry. The third one is tertiary sector that produces services. मतलब अब प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो चीजें बना देती हैं. टर्शरी क्या करता है कि टर्शरी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इट इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू अदर बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स. सर्विसेज में इन्वॉल्व होलसेलिंग, रिटेलिंग, entertainment, transport, distribution and banking, just like teaching, doctors. This all comes in the tertiary sector. The production of information is also regarded as a service, but some economists now increasingly attribute it to an emerging fourth sector and that is the quaternary sector. अब जो है economist ने फोर्थ सेक्टर भी निकाल दिया है कि लाइक जो ये सारी जो है चीजें टर्शरी सेक्टर में है इनको मजीद जो है इंफॉर्मेशन इनकी देना, इनको जो है वो रिसर्च में, डेवलपमेंट में जो है इन सारी चीजों को बताना. So that comes in the quaternary sector. All of you highlight these all points at page number 85. Okay, next there is Pakistan economic structure, primary sector. Being an agrarian or agricultural economy, Pakistan's primary sector plays a major role in the country's economy and contributes about 21% of the country's economy as of 2009
and around 43% of the country's labor is engaged in the primary sector. मतलब प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तान, और इसमें जो है 21% जो है इसका इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कंट्रीज इकोनॉमी। इसका जो सारा जो 21% जो इनमें से बेनिफिट होता है वो कंट्री को जाता है, मुल्क में जाता है। एंड अराउंड 43% ऑफ द कंट्रीज लेबर इज इंगेज। 43% जो है पूरे मुल्क में जो लोग हैं वो यहाँ एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और मोस्टली जो है वो प्राइमरी सेक्टर्स में काम करते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या पढ़ा, इट इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड एक्सेट्रा। सो दैट इज प्राइमरी सेक्टर. All of you highlight these points at page number 85. Okay, next, some major agricultural products of Pakistan includes onion, cotton, rice, tangerines, संतरों को कहते हैं, oranges, apricot, khubani, sugarcane, गन्ना, date palm, clementine quinoa, and wheat. Dairy farming is also a large industry in Pakistan, and Pakistan is the 5th largest milk producer in the world. And do you know Sahiwal is famous for its dairy? पाकिस्तान इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकपी, व्हाइट चनों का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में, एंड द थर्ड largest producer of mango in the world as of 2005 according to the Food and Agricultural Organization of the United Nations. So all of you highlight these all important points at page number 86. Okay, next is cottage or household industries are very important for Pakistani economy. Cottage और household industries वो होती हैं जो लोगों ने जो कुछ गरीब लोग होते हैं जिन्होंने अपने ही घरों में जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज बना ली हैं, जिसमें वो लोग हैंडमेड वर्क करते हैं, कॉटन वीवर्स, लाइक हाथ से बुने हुए स्वेटर्स बनाते हैं, फिर मिट्टी के बर्तन, और फिर और भी मजीद आर्ट और क्राफ्ट का काम करते हैं। उन लोगों को क्या कहते हैं, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज लोगों ने जो है अपने घरों में बनाई हुई है। कॉटेज इंडस्ट्री हैज ऑल्सो गेन इमेंस इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा जो है इसने अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो हासिल कर दी इन द लार्ज urban cities. So all of you highlight these points at page number 86. Okay, next, in 1987, development of a submarine repair and rebuild facility was completed. Next, transfer of technology with France led to the construction of the Augusta B-90 submarine in the late 1990s and early 2000. मतलब ये एक सबमरीन जो है वो तैयार हुई थी, दैट नेम वाज अगोस्टा B-90। तो ये 1990s और 2000 से पहले जो है वो ये सबमरीन जो है वो तैयार हुई थी। और इसमें क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं जैसे शिपिंग करते थे इस सबमरीन में जो है वो ट्रांसफ़र करते थे डिफरेंट चीज़ें with France or and other countries as well. All of you highlight these points at page number 87. Okay, next we have tertiary sector. The services sector of Pakistan mainly includes industries such as finance, communications, transport, and insurance that account for 24% of the country's GDP. Wholesale and retail businesses are 30% share of Pakistan's GDP. मतलब कि टर्शरी सेक्टर में ये जो फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मतलब ये सारी फैसिलिटीज जो है टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसकी वजह से जो पाकिस्तान की जीडीपी को भी जो है वो कभी 24% जो मतलब डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस और इंश्योरेंस पे, वो 24% होता है कंट्रीज जीडीपी। और अगर होलसेल और रिटेल बिजनेसेस हैं तो वो 30% जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी में ट्रांसफर होता है। ऑल ऑफ यू हाईलाइट दीज पॉइंट्स एट पेज नंबर 88. Okay, as our chapter has been completed, now come to page number 96 for unit summary. Industries, Sana. There are 3 types of industries. There are primary, secondary and tertiary. प्राइमरी इंडस्ट्रीज मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो अल्लाह ताला की तरफ से जो चीजें बनी हुई हैं उन्हीं को यूज करके जो है वो काम करते हैं, दैट कम्स इन प्राइमरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री चेंजेस दोज नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोडक्ट्स, मतलब उनको फाइनल गुड्स में लेकर आती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, या उनको जो है वो चेंज करके प्रोडक्ट्स में बनाती हैं. Whereas tertiary industries provide services. फिर जो tertiary industries होती है वो इन चीज़ों की services provide करती हैं. Cottage industries are significant part of the primary sector. Pakistan predominantly relies on the primary sector. पाकिस्तान जो है वो primary sector पे जो है वो ज़्यादा जो है वो rely करता है, मतलब उन पर इन्हिसार करता है. All of you highlight these points at page number 96. Okay, now all of you open your winter packs at page number 14. We are going to do unit number 4, chapter number 4, industry, short question answers. Question number 1. How many sectors of industries are there? There are 4 sectors of industries: primary sector, secondary sector, tertiary sector and quaternary sector.
Okay, we have question number 2. Name the major industries of Pakistan. The major industries of Pakistan are textile, steel, cement, agriculture, fertilizer, tobacco, edible oil, जो खाने वाला तेल होता है, sugar, chemical and machinery. Question number 3. What is the gross domestic product? GDP क्या होता है? The answer is the total values of goods produced and services provided in a country during 1 year. मतलब पूरे साल में जो चीजें बनती हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पूरी जो है मुल्क में, उसका जो है वो ग्रैंड टोटल किया जाता है आफ्टर अ ईयर. पूरे एक साल बाद जो है उसका पता चलता है कि कितनी चीजें बनी थी, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड हुई और कितना जो है वो इनकम आया. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द रोल ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन टर्शरी सेक्टर? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का टर्शरी सेक्टर में क्या रोल है? The answer is Pakistani government is actively engaged in privatization of banking, telecommunications and utilities to produce more jobs in the country. मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस तरफ भी ज्यादा जो है वो काम कर रही है कि वो पब्लिक जगह से जो प्राइवेट बैंकिंग कर रही है. बैंक्स को प्राइवेट करना मतलब और लोगों को जो है वो इसको सेल कर देना और फिर ज्यादा जो है वो लोग जो है उनको जॉब्स मिलती हैं. देन टेलीकम्युनिकेशंस एंड यूटिलिटीज टू प्रोड्यूस मोर जॉब्स इन द कंट्री. Okay, next we have question number 5. Why cottage industries are important? The answer is cottage or household industries are very important for Pakistani economy. पाकिस्तानी मौशत के लिए cottage और household industries जो है, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो लोगों ने घरों में ही छोटे से कारोबार जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं. जस्ट लाइक हैंडमेड चीजें बना ली, लाइक पोट्री हो गया, मिट्टी के बर्तन बना लिए या कोई भी आर्ट और क्राफ्ट वाला काम कर लिया. मैनी फैमिलीज डिपेंड ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज फॉर देयर इनकम. बहुत सारे ऐसे गरीब खानदान हैं जो मतलब इस तरह का घरों में काम करके जो है वो अपनी इनकम कमाते हैं, अपनी रोजी कमाते हैं. कॉटेज इंडस्ट्री हैज गेन्ड इमेंस इंपॉर्टेंस. बहुत ज्यादा जो है इसने तरक्की पाई है इन द लार्ज अर्बन सिटीज, शहरी जो है जगहों पर. द ट्रेडिशनल पैटर्न्स आर्ट एंड क्राफ्ट्स आर इन डिमांड एंड स्पेशली इन द वेस्ट. मतलब जो लोग घरों में आर्ट और क्राफ्ट का काम करके पोट्री वाले जो मिट्टी के बर्तन होते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के, और उसके ऊपर जो है वो पेंटिंग और इस तरह के काम करके जो है लोग अपनी इनकम कमा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा जो है इसको पसंद किया जाता है. Okay, now come to page number 15. We are going to do worksheet of unit number 4, chapter number 4, industry. Question number 1, fill in the blanks. The very first is dash economy can be categorized as semi-industrialized, that is Pakistan's economy. Number 2, GDP stands for gross domestic product. Number 3, dash sector is divided into light and heavy industry, secondary sector. Number 4, about dash percent of the country's labor is engaged in primary sector, about 43%. Number 5, Pakistan is the second largest producer of chickpea, चने को कहते हैं. Question number 2, mark T for true and F for false statement. Number 4, ministry includes 6 other specialized organizations, that is false. Number 2, the small industry of Pakistan includes steel mills, no, that is false. Number 3, forestry is included in secondary sector, no, that is included in primary sector. Number 4, wholesale retail businesses are 30% share of Pakistan's GDP. Yes, true. Number 5, dairy farming is small industry in Pakistan. True. So all of you complete your page number 15 in a neat handwriting. Okay, next question number 3, choose the correct option. The very first is transfer of technology with France led to the construction of dash submarine. The options are Augusta A90, Augusta B90, Augusta B91 or Augusta A91. So the answer is Augusta B90. The B option is correct. Number 2, around dash percent of countries' exports include textile and apparel. The answer is 51.4%. The A option is correct. Third one, dash industry has also gained immense importance in the large urban cities, that is cottage industry. The A option is correct. Number 4, Pakistan is dash largest producer of mango in the world, that is the third largest producer. C option is correct. Number 5, dash of economy makes use of natural resources. The answer is primary sector. So all of you complete your page number 15 on your winter packs. Okay, now all of you open your social studies notebooks and complete your index. Our today's index is unit number 4, chapter number 4, industry. We will do its question answers and worksheet. Next, before starting the new lesson, we always make the title page. So let's make the title page of unit number 4, people and economics. And in this unit, we will do chapter number 4, industry. It's reading, words, meanings, question answers and worksheet.
Okay, coming to next one page, we have to make timeline page, and that includes sector of industries and major industries. On the next page, prepare your page, write down date, today's task, mention your topic, that is unit number 4, chapter number 4, industry. As we are going to do words meaning, so draw 2 lines on the page. Write down words, English meaning and Urdu meaning. The very first is economy, financial system, मौशत, मुल्क की कितनी मौशत है. Tangerines, one of a variety with deep orange red skin, संखरे को कहते हैं. Chickpea, that is yellowish edible seed, घरों में जो हम यूज करते हैं चने, white चने. Apparel, that are clothes, मलबूसात. Then flourishing, that means developing rapidly and successfully, फल फूल रहा है, मतलब बढ़ने के अमल को कहते हैं. All of you write it in a very neat handwriting. Okay, on the next page, prepare your page, write down date, mention today's task, your topic, that is unit number 4, chapter number 4, industry. We will do its short question answers. So you have to rewrite these question answers by taking help from your winter pack. In the same way, you will write question number 2 by taking help from your winter pack in a very neat handwriting. Okay, coming to next one page, prepare your page, write down today's task and mention your topic, give caption of your question answers. So you have to rewrite question number 3, what is the gross domestic product, from your winter pack, page number 14. And in the same way, you will rewrite question number 4, what is the role of Pakistani government in tertiary sector, in a very neat handwriting. Coming to the next one page, prepare your page. The last question of this one chapter, that is question number 5. You have to rewrite question number 5 by taking help from winter pack, page number 14 on your notebooks. Okay, now is the time for tasks to do. You have to learn highlighted points of page number 85 till 88. Then you will write and learn question answers of unit number 4, chapter number 4. And you will also do and paste worksheet of unit number 4, chapter number 4, as you have pasted of history. You have to slightly detach your worksheet from your winter pack and you have to paste it on your notebooks. Dear students, today we will talk about how to prevent yourself from the spread of COVID. First of all, wear a mask. Mask जरूर पहने. Save lives. By wearing mask, you will save your lives as well as others' lives. Clean your hands. You must clean your hands after you just use anything, or if you touch something or either you eat something, then you must clean your hands. Then keep a safe distance. If you are standing with someone, then keep at least 6 feet distance. Stay home if you feel unwell. If you have fever, you have a cough, flu, then you must stay at home and isolate yourself. Okay students, I hope everybody understood today's lesson. Till the next lesson, take a great care of yourselves. Allah Hafiz.